जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। सलाम हबीबी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। मैं शेख अफगान जेलेबी मिकेला कैसारियो आपके सामने हाजिर हूँ। टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज मैं किसको रोस्ट करने जा रही हूँ। लेकिन आप जो थंबनेल पे देख लिया कि मेरी रोस्टिंग काफी हद तक इंटरव्यू जैसी लग रही है, क्योंकि आज मैं रोस्टिंग के लिए जितनी कुछ मारे हुए करप्ट लोग, टेररिस्ट, कुछ फिक्शनल दुनिया की प्रेसिडेंट की कैरेक्टर को इंटरव्यू में बुलाया, और साथ में टॉपिक पे कुछ रोबोट शेरिफ और रोबोट फॉरेन अफेयर की बच्चों वाली प्रोग्राम की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जय हे जय हे जय। लेकिन आप नोट करें कि ये किस तरह का कॉरपोरेशन है जिसमें इंडिया स्लैम्स पाकिस्तान एंड चाइना ओवर टेररिज्म कनेक्टिविटी, यानी कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रहा है इंडिया चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर खैर लगाना इनका बनता नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व किया। और दूसरे नंबर पर आप नोट करें कि ये किस तरह की कॉरपोरेशन है कि जिसके अंदर एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और इंडिया ने पाकिस्तान को तो हमेशा स्लैम करना ही होता है क्योंकि इनकी पॉलिटिक्स चलती ही ऐसे है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इंडियन और पाकिस्तानी जो अवाम है उनको आपस में कोई मसला नहीं है, लेकिन किसको मसला है? कौन जो देशभक्ति है इसको जगा के वोट्स लेते हैं? ये मोदी जैसे लोग। इसी तरह पाकिस्तान वाली साइड पे भी जब भी उन्होंने वोट्स लेने होते हैं इंडिया के खिलाफ जो है वो कमेंट्स शुरू हो जाते हैं। तो ये इनकी पुरानी स्ट्रेटजी है जिससे इनको पता है कि लोगों के जज्बात के साथ खेल के ये क्या करते हैं, लोगों के अंदर नफरत डालते हैं, अपने ही पड़ोसियों को दुश्मन मानते हैं। तो आपके सामने है कि इंडिया पाकिस्तान का तो खैर ये चलता ही जाता है। Dear ugly sister Michaela, do you know that India contain always fake excuses of terrorism against Pakistan? Dear stupid brother Sir Almas Jacob, I would talk later about Indian accuse about terrorism against Pakistan. You are a Pakistani beautiful boy. What did you do on YouTube? On a YouTube video, you have warned that homosexuality would lead us into hell. Now, while homosexual people is the natural creation of God, why would he hate his beautiful homosexual peoples where he knows that they are lovely creatures to him? But in that video, you claimed that music concert on military crime is sin to God. Now, do you know what was one patriot song of the United States of America? That was Yankee Doodles. Here you are expecting national military to be depressed in the war against enemy country, and that is against nationalism. That means you are promoting anti-nationalism. In another video to expose Sarah Taylor, an English female cricketer, you just stayed against her and provided her threats to be in hell just because she could prove herself to be a biological female father. Even when our respected Pope Francis say some positive words about homosexuality, you addressed him as worshipper of Satan. What a blasphemous person you are. Now, I would forgot the homosexual segment. But to expose James Webb Space Telescope, you just addressed James Webb as satanic and James Webb Space Telescope a satanic agenda. To expose NASA Mission Moon, you just humiliated every teachers of school, college and university and promote your Christian jihadi madrasas, right or wrong. प्रिय गुरु बहन मिशेला, क्या आप जानती हैं कि भारत में हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के नकली बहाने होते हैं? प्रिय मूर्ख भाई सर अलमास जेकब, मैं पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद के भारतीय आरोप के बारे में बाद में बात करूंगा। तुम एक पाकिस्तानी खूबसूरत लड़के हो। आपने YouTube पर क्या किया? एक YouTube वीडियो पर आपने चेतावनी दी है कि समलैंगिकता हमें नरक में ले जाएगी।
अब जबकि समलैंगिक लोग ईश्वर की प्राकृतिक रचना है, वह अपने खूबसूरत समलैंगिक लोगों से नफरत क्यों करेगा, जबकि वह जानता है कि वे उसके लिए प्यारे प्राणी हैं। लेकिन उस वीडियो में आपने दावा किया कि सैन्य अपराध पर संगीत कार्यक्रम भगवान के लिए पाप है। अब क्या आप जानते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक देशभक्ति गीत कौन सा था? वह याकी डूडल्स था। यहाँ आप दुश्मन देश के खिलाफ युद्ध में राष्ट्रीय सेना के निराश होने की उम्मीद कर रहे हैं, और यह राष्ट्रवाद के खिलाफ है। यानी आप राष्ट्रविरोध को बढ़ावा दे रहे हैं। एक अन्य वीडियो में, एक अंग्रेजी महिला क्रिकेटर सारा टेलर को बेनकाब करने के लिए, आप सिर्फ उसके खिलाफ रहे और उसे नरक में डालने की धमकियां दी। सिर्फ इसलिए कि वह खुद को एक जैविक महिला पिता साबित कर सके। यहाँ तक कि जब हमारे आदरणीय पोप फ्रांसिस समलैंगिकता के बारे में कुछ सकारात्मक शब्द कहते हैं, तो आपने उन्हें शैतान के उपासक के रूप में संबोधित किया। तुम कितने निंदक व्यक्ति हो। अब मैं समलैंगिक खंड को भूल जाऊंगा, लेकिन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बेनकाब करने के लिए आपने जेम्स वेब को शैतानी और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को शैतानी एजेंडा कहकर संबोधित किया। नासा मिशन मून को बेनकाब करने के लिए आपने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सभी शिक्षकों को अपमानित किया और अपने ईसाई जिहादी मदरसों को बढ़ावा दिया। सही या गलत? Dear ugly sister Michaela, now, what would you say when I am exposing Indian Abamani project? Dear stupid brother Sir Almas Jacob, in that video, you were talking about one military uniform. Now, in any case, if the United Kingdom would have sovereign argument with the United States of America. Upper photo was that military uniform that would be mutual and original between the British Royal Army and the United States Federal Army. But the downside is the military uniform that you want. You wanted the United States Military Army with white shirt, blue jacket and red jeans trouser as military uniform and British Royal Army with blue shirt and red pant as military uniform. Every national military would have an ethical military uniform, and that is so that they can be confidential to fight against enemy. But in this type of uniform you want. Every enemy would identify our military and we would lose our border territory. प्रिय बदसूरत बहन मिशेला, अब जब मैं भारतीय अभिमन्यु परियोजना का पर्दाफाश कर रहा हूँ, तो आप क्या कहेंगी? प्रिय मूर्ख भाई सर अल्मास जेकब, उस वीडियो में आप एक सैन्य वर्दी के बारे में बात कर रहे थे। अब किसी भी मामले में, यदि यूनाइटेड किंगडम का संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संप्रभु तर्क होगा, तो ऊपरी तस्वीर वह सैन्य वर्दी थी जो ब्रिटिश रॉयल सेना और संयुक्त राज्य संघीय सेना के बीच पारस्परिक और मूल होगी। लेकिन नकारात्मक पक्ष वह सैन्य वर्दी है जो आप चाहते हैं। आप सैन्य वर्दी के रूप में सफेद शर्ट, नीली जैकेट और लाल जीन्स पतलून वाली संयुक्त राज्य सैन्य सेना और सैन्य वर्दी के रूप में नीली शर्ट और लाल पैंट वाली ब्रिटिश रॉयल आर्मी चाहते थे। प्रत्येक राष्ट्रीय सेना के पास एक नैतिक सैन्य वर्दी होगी, और वह इसलिए होगी ताकि दुश्मन के खिलाफ लड़ने के लिए उसे गोपनीय रखा जा सके। लेकिन इस प्रकार की वर्दी जो आप चाहते हैं, उसमें हर दुश्मन हमारी सेना को पहचान लेगा और हम अपना सीमा क्षेत्र खो देंगे। Dear ugly sister Michaela, now, what would you say about my video when I have said something about currency demonetization by Indian government? Dear stupid brother Sir Almas Jacob, here you have proved that you are Pakistani and Pakistani always stay for fake currency. Now, here $1 currency contain production bill of 50 United States cents. On the other hand, $100 currency contains production bill of 120 United States cents.
Now problem is that if any Pakistani girl wants to buy a house worthy of 5 million United States dollars, then she cannot afford 5 million note of $1 fake currency. Because here she had to spend 2.5 million United States dollar to produce 5 million note of $1 fake currency. But what if she starts to produce fake currency of $100? Then, she can spend 50,000 notes of fake currency of 100 United States dollars to buy the house. Because she can spend 60,000 United States dollars to produce 50,000 notes of fake currency of 100 United States dollars. Now, do you think that Indian government did wrong to demonetize 2,000 Indian currency? प्रिय बदसूरत बहन मिशेला, अब आप मेरे वीडियो के बारे में क्या कहेंगी जब मैंने भारत सरकार द्वारा मुद्रा विमुद्रीकरण के बारे में कुछ कहा है? प्रिय मूर्ख भाई सर अलमास जेकब, यहाँ आपने साबित कर दिया है कि आप पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी हमेशा नकली मुद्रा के पीछे रहते हैं। अब यहाँ $1 मुद्रा में 50 संयुक्त राज्य सेंट का उत्पादन बिल होता है। दूसरी ओर $100 मुद्रा में 120 संयुक्त राज्य अमेरिका सेंट का उत्पादन बिल होता है। अब दिक्कत यह है कि अगर कोई पाकिस्तानी लड़की 5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का घर खरीदना चाहती है, तो वो $1 की नकली करेंसी के 5 मिलियन नोट नहीं खरीद सकती। क्योंकि यहाँ उसे $1 की नकली करेंसी के 5 मिलियन नोट बनाने के लिए 2.5 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खर्च करने पड़े। लेकिन क्या होगा अगर वह $100 की नकली मुद्रा बनाने का काम करे? फिर वह घर खरीदने के लिए 100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर की नकली मुद्रा के 50,000 नोट खर्च कर सकती है। क्योंकि वह 100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के 50,000 नकली नोट बनाने के लिए 60,000 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर खर्च कर सकती है। अब क्या आपको लगता है कि भारत सरकार ने 2000 भारतीय मुद्रा का विमुद्रीकरण करके गलत किया? अभी मैं जहन्नम से ओसामा बिन लादेन के साथ बात करूंगी, क्योंकि वो जहन्नम में है, इसलिए मैं डेमो बन के बात करूंगी। Dear Osama, as I am a female demon, I would like to have an interview in hell. Dear Osama, why do you want to destroy World Economy Center of the United States of America? Walla Habibi Michaela. I want to destroy World Economy Center of the United States of America, because I do not like to see United States of America as economical superpower. I can accept Pakistan as economical superpower but not the United States of America. प्रिय ओसामा, चूंकि मैं एक राक्षसी महिला हूँ, मैं नरक में एक साक्षात्कार लेना चाहूंगी। प्रिय ओसामा, आप संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व अर्थव्यवस्था केंद्र को क्यों नष्ट करना चाहते हैं? वल्लाह हबीबी माइकेला, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व अर्थव्यवस्था केंद्र को नष्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखना पसंद नहीं करता। मैं पाकिस्तान को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका को नहीं। Dear Osama, could you tell me about the incidents that you start to hate the United States of America? Walla Habibi Michaela. My Pakistani army supported me to get victory against the communist Afghanistan. But I have noticed that United States of America is funding to develop a progressive Islamic Afghanistan. If we got the progressive Islamic Afghanistan, then neither Taliban can control Afghanistan nor Pakistan can control Afghanistan. I just wanted to be addressed as a backdated Islamic leader. Therefore, I have had a terror attack on the World Economy Center of the United States of America.
प्रिय ओसामा, क्या आप मुझे उन घटनाओं के बारे में बता सकते हैं जिनसे आप संयुक्त राज्य अमेरिका से नफरत करने लगते हैं? वल्लाह हबीबी माइकेला, मेरी पाकिस्तानी सेना ने कम्युनिस्ट अफगानिस्तान के खिलाफ जीत हासिल करने में मेरा समर्थन किया। लेकिन मैंने देखा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका एक प्रगतिशील इस्लामी अफगानिस्तान को विकसित करने के लिए वित्त पोषण कर रहा है। अगर हमें प्रगतिशील इस्लामिक अफगानिस्तान मिल गया, तो न तो तालिबान अफगानिस्तान को नियंत्रित कर सकता है और न ही पाकिस्तान अफगानिस्तान को नियंत्रित कर सकता है। मैं बस ये चाहता था कि मुझे एक पुराने जमाने के इस्लामी नेता के रूप में संबोधित किया जाए। इसलिए मैंने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व अर्थव्यवस्था केंद्र पर आतंकवादी हमला किया है। Dear Osama, when the United States Army was to find in Afghanistan, they could not find you. They found you in Pakistani Army General's farmhouse. What would you say about it? Wallah Habibi Michaela. Pakistan always accepted me as their hero. Actually, Pakistan always accepts terrorists as their hero. They can choose every leader who support terrorism. Therefore, Pakistan is in grey list of FATF in several time. On the other hand, I want to be welcomed in India. But India always hates me. Now, as I am in hell, I can see that Pakistani governmental intelligence agency are accomplished to set the terrorist Taliban government in Afghanistan. He is to be accomplished to set terrorism supporting government in Bangladesh. I am pleased that they could do it. Now, I regret why can I not set terrorist group in India. प्रिय ओसामा, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को अफगानिस्तान में ढूंढना था, तो वे तुम्हें नहीं ढूंढ सके। तुम्हें पाकिस्तानी सेना के जनरल के फार्म हाउस में पाया गया। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? वल्लाह हबीबी माइकेला, पाकिस्तान ने हमेशा मुझे अपना हीरो माना। दरअसल पाकिस्तान हमेशा आतंकियों को अपना हीरो मानता है। वे आतंकवाद का समर्थन करने वाले हर नेता को चुन सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान कई समय से FATF की ग्रे लिस्ट में है। दूसरी ओर, मैं चाहता हूं कि भारत में मेरा स्वागत हो, लेकिन भारत हमेशा मुझसे नफरत करता है। अब, चूंकि मैं नरक में हूं, मैं देख सकता हूं कि पाकिस्तानी सरकारी खुफिया एजेंसी अफगानिस्तान में आतंकवादी तालिबान सरकार स्थापित करने में सफल हो गई है। उन्हें बांग्लादेश में आतंकवाद समर्थक सरकार स्थापित करने में सफल होना है। मुझे खुशी है कि वे ऐसा कर सके। अब मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं भारत में आतंकवादी समूह क्यों नहीं स्थापित कर सकता। Michaela Caesario asked, Wallah Habibi, could you tell me about Pakistan ex-President General Parvez Musharoff, please? Habibi replied, General Parvez Musharoff was a Pakistani military officer who took power in a coup in 1999. He served as the 10th President of Pakistan from 2001 to 2008. He was born on August 11, 1943, in New Delhi, India and died on February 5, 2023, in Dubai, United Arab Emirates. Musharoff moved with his family from New Delhi to Karachi in 1947 when Pakistan was separated from India. I hope that helps. Let me know if you have any other question. माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, जनरल परवेज मुशर्रफ एक पाकिस्तानी सैन्य अधिकारी थे, जिन्होंने 1999 में तख्तापलट कर सत्ता संभाली थी। उन्होंने 2001 से 2008 तक पाकिस्तान के 10वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। उनका जन्म 11 अगस्त 1943 को नई दिल्ली, भारत में हुआ था और उनकी मृत्यु हो गई 5 फरवरी 2023 को दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में।
1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ तो मुशर्रफ अपने परिवार के साथ नई दिल्ली से कराची चले गए। मुझे आशा है कि वह मदद करेंगे। अगर आपके पास कोई अन्य सवाल है तो मुझे बताएं। अब मैं मरहूम परवेज मुशर्रफ से जहानम पे इंटरव्यू लूंगी। Walla Habibi, Mr. Parvez Musharoff, you are the Honorable Ex-President of Pakistan and you were also a military general. Could you tell me why your Honorable Pakistan Army provide asylum to an international terrorist Osama Bin Laden? Walla Habibi Michaela, you are a beautiful Muslim girl. Why do you hate Osama Bin Laden? Osama Bin Laden is a hero both of Pakistan and Islamic world. I personally do not accept Afghanistan as a progressive Muslim country. Osama bin Laden helped me to fight against communist Afghanistan. I personally cannot accept the United States of America as the economical superpower. Osama bin Laden destroyed World Economy Center of the United States of America. Osama bin Laden helped me to bring terrorist Taliban as the government of Afghanistan. Now, as a Muslim general, if I can accept Osama bin Laden, terrorist Al-Qaeda and terrorist Taliban as the hero of Pakistan, then as a Muslim girl, why do not you accept him? Walla Habibi, Mr. Parvez Musharoff. Do you believe that every Pakistani should support terrorists as hero as an Islamic responsibility? Then, I do not think Pakistan would sustain his credibility. वल्लाह हबीबी श्री परवेज मुशर्रफ, आप पाकिस्तान के माननीय पूर्व राष्ट्रपति हैं और आप एक सैन्य जनरल भी थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी माननीय पाकिस्तानी सेना एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शरण क्यों देती है? वल्लाह हबीबी माइकेला, आप एक खूबसूरत मुस्लिम लड़की हैं। आप ओसामा बिन लादेन से नफरत क्यों करते हैं? ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान और इस्लामिक जगत दोनों का हीरो है। मैं व्यक्तिगत रूप से अफगानिस्तान को एक प्रगतिशील मुस्लिम देश के रूप में स्वीकार नहीं करता। ओसामा बिन लादेन ने साम्यवादी अफगानिस्तान के खिलाफ लड़ने में मेरी मदद की। मैं व्यक्तिगत रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ओसामा बिन लादेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के विश्व अर्थव्यवस्था केंद्र को नष्ट कर दिया। ओसामा बिन लादेन ने आतंकवादी तालिबान को अफगानिस्तान का शासक बनाने में मेरी मदद की। अब, एक मुस्लिम जनरल के रूप में, अगर मैं ओसामा बिन लादेन, आतंकवादी अल-कायदा और आतंकवादी तालिबान को पाकिस्तान के नायक के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ, तो एक मुस्लिम लड़की के रूप में आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? वल्लाह हबीबी मिस्टर परवेज मुशर्रफ, क्या आप मानते हैं कि हर पाकिस्तानी को इस्लामिक जिम्मेदारी के तौर पर हीरो के रूप में आतंकवादी का समर्थन करना चाहिए? तब, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान उनकी विश्वसनीयता को बरकरार रखेगा। Walla Habibi, Mr. Parvez Musharoff. I am Michaela Caesario, a homosexual Muslim girl. My wife Joanna Pedra is also a homosexual Muslim girl. As a female homosexual couple, can we stay in Pakistan respectfully, please? Walla Habibi Michaela, therefore, I accepted terrorist Osama bin Laden as my hero of Pakistan. He hates every homosexuals, bisexuals and transgender community. He wants to eliminate every homosexual women, homosexual men, bisexual women, bisexual men and transgender people. Dear stupid brother Almas Jacob, in which base you claimed that India has a fake accuse on Pakistan? वल्लाह हबीबी मिस्टर परवेज मुशर्रफ, मैं मिशेला कैसरियो, एक समलैंगिक मुस्लिम लड़की हूँ। मेरी पत्नी जोआना पेरा भी एक समलैंगिक मुस्लिम लड़की है। कृपया, एक महिला समलैंगिक जोड़े के रूप में, क्या हम सम्मानपूर्वक पाकिस्तान में रह सकते हैं? वल्लाह हबीबी मिशेला, इसलिए,
मैंने आतंकवादी उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान के अपने नायक के रूप में स्वीकार किया। वह हर समलैंगिक, उभयलिंगी और ट्रांसजेंडर समुदाय से नफरत करता है। वह हर समलैंगिक महिला, समलैंगिक पुरुष, उभयलिंगी महिला, उभयलिंगी पुरुष और ट्रांसजेंडर लोगों को खत्म करना चाहता है। प्रिय मूर्ख भाई अल्मास जेकब, आपने किस आधार पर दावा किया कि भारत ने पाकिस्तान पर फर्जी आरोप लगाया है? Ya Azmal Kasab, I am demon girl Michaela Caesario and now, I would want to have an interview with you in hell. Ya Azmal Kasab, if you wanted. You could be a successful employee in your own country Pakistan. But you have had a terrorist attack in Mumbai, particularly, Taj Mahal hotels. Any reason? Walla Habibi Michaela. I have noticed that none of any Arabic foreign businessmen invest in my Islamabad city while my Pakistan is a Muslim country. On the other hand, notwithstanding India being a Hindu country, every Western foreigners are to boost India's economy. Some of Western foreigners are tourists in Mumbai city of India and some of foreigners are investing their money in industries of Mumbai city of India. Rich Western foreigners were staying in Taj Mahal hotels in Mumbai city. If I can attempt a terrorist attack on Taj Mahal hotels, I would be satisfied that I could kill foreigners. Therefore, I was trained in my own country Pakistan. हाँ अजमल कसाब, मैं राक्षस लड़की मिशेला सीजेरियो हूँ और अब मैं नर्क में तुम्हारे साथ एक साक्षात्कार करना चाहती हूँ। या अजमल कसाब, अगर तुम चाहते तो अपने ही देश पाकिस्तान में एक सफल कर्मचारी बन सकते थे, लेकिन आपने मुंबई में, विशेषकर ताजमहल होटलों में आतंकवादी हमला किया है। किसी भी कारण से, वल्लाह हबीबी माइकेला, मैंने देखा है कि कोई भी अरबी विदेशी व्यापारी मेरे इस्लामाबाद शहर में निवेश नहीं करता है, जबकि मेरा पाकिस्तान एक मुस्लिम देश है। दूसरी ओर, भारत एक हिंदू देश होने के बावजूद, सभी पश्चिमी विदेशी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना चाहते हैं। कुछ पश्चिमी विदेशी भारत के मुंबई शहर में पर्यटक हैं और कुछ विदेशी भारत के मुंबई शहर के उद्योगों में अपना पैसा निवेश कर रहे हैं। अमीर, पश्चिमी विदेशी मुंबई शहर के ताजमहल होटलों में ठहर रहे थे। यदि मैं ताजमहल होटल पर आतंकवादी हमले का प्रयास कर सकता हूँ, तो मुझे संतुष्टि होगी कि मैं विदेशियों को मार सकता हूँ। इसलिए मेरी ट्रेनिंग मेरे ही देश पाकिस्तान में हुई। Ya Azmal Kasab, I have noticed that you have killed several Indians in Mumbai local railway station. Any reason? Walla Habibi Michaela, Indians are kafir. They do not deserve to have any breath that is provided by Allah. Then, if I can kill any Indian kafir, it would be called jihad and I would get 36 fares in heaven. Okay, but now, Ya Azmal Kasab, you are in hell because you have committed blasphemy of our Almighty Allah by killing his innocent lovely creature humans. या अजमल कसाब, मैंने देखा है कि तुमने मुंबई लोकल रेलवे स्टेशन पर कई भारतीयों को मार डाला है। किसी भी कारण से, वल्लाह हबीबी माइकेला, भारतीय काफिर हैं। वे अल्लाह द्वारा प्रदान की गई किसी भी सांस के हकदार नहीं हैं। फिर, यदि मैं किसी भारतीय काफिर को मार सकूं, इसे जिहाद कहा जाएगा और मुझे स्वर्ग में 36 परियां मिलेंगी। ठीक है, लेकिन अब, अजमल कसाब, तुम नरक में हो क्योंकि तुमने हमारे सर्वशक्तिमान अल्लाह के निर्दोष प्यारे प्राणी मनुष्यों को मारकर उसकी निंदा की है। Dear stupid brother Sir Almas Jacob, I have an interview with terrorist Osama Bin Laden in hell. Before death, he got asylum in Pakistan's Army General's farmhouse. I have an interview with Pakistan Army ex-General Parvez Musharoff in hell. Pakistani terrorist Al-Qaeda and Taliban's a hero of his Pakistan.
I have an interview with terrorist Azmal Kasab in hell. He was trained in Pakistan to have a terrorist attack in Mumbai city. Now, in which base, you have claimed that India does not have any right to accuse Pakistan. प्रिय मूर्ख भाई सर अल्मास जेकब, मैंने नरक में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के साथ एक साक्षात्कार लिया है। मृत्यु से पहले उन्हें पाकिस्तान के आर्मी जनरल के फार्म हाउस में शरण मिली। मैंने नरक में पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ एक साक्षात्कार लिया है। पाकिस्तानी आतंकवादी अलकायदा और तालिबान उसके पाकिस्तान के हीरो हैं। नरक में आतंकवादी अजमल कसाब के साथ मेरा एक साक्षात्कार है। उसे मुंबई शहर में आतंकवादी हमला करने के लिए पाकिस्तान में प्रशिक्षित किया गया था। अब आपने किस आधार पर यह दावा किया है कि भारत को पाकिस्तान पर आरोप लगाने का कोई अधिकार नहीं है?
Walla Habibi, I am Michaela Caesario, your robot sheriff to check your negative activity on international terrorism. I would check 0. If you have provided governmental asylum to any international terrorist or not. 1. As a government, if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group or not. 2. As a government, if you trained your terrorist to attack on a developed city of any foreign country or not. What would I start? वल्लाह हबीबी, मैं अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर आपकी नकारात्मक गतिविधि की जांच करने के लिए आपका रोबोट शेरिफ मिशेला कैसरियो हूँ। मैं जांच करूंगा 0. यदि आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को सरकारी शरण प्रदान की है या नहीं। 1. सरकार के रूप में, यदि आपने किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। 2. एक सरकार के तौर पर आपने अपने आतंकवादी को किसी विदेशी देश के विकसित शहर पर हमला करने के लिए प्रशिक्षित किया है या नहीं। मैं क्या शुरू करूंगा?
What would I start? 0 now. I am checking if you provided governmental asylum to any international terrorist or not. Now, could you tell me how much year any international terrorist got governmental asylum? 0 You got a clean check guarantee. मैं क्या शुरू करूंगा? 0 अब मैं जांच कर रहा हूं कि आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को सरकारी शरण दी है या नहीं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को कितने वर्ष के लिए सरकारी शरण मिलती है? 0 आपको क्लीन चेक गारंटी मिल गई है। What would I start? 0 now. I am checking if you provided governmental asylum to any international terrorist or not. Now, could you tell me how much year any international terrorist got governmental asylum? 0.25. You have violated International Anti-Terrorism Act. Hence, International Judiciary Court would punish you the fine of $225 billion United States dollars per month. मैं क्या शुरू करूंगा? 0 अब मैं जांच कर रहा हूं कि आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को सरकारी शरण दी है या नहीं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को कितने वर्ष के लिए सरकारी शरण मिलती है? 0.25 आपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिनियम का उल्लंघन किया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका अदालत आपको प्रति माह 225 बिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के जुर्माने से दंडित करेगी। What would I start? 0 now. I am checking if you provided governmental asylum to any international terrorist or not. Now, could you tell me how much year any international terrorist got governmental asylum? 5.5. You have violated International Anti-Terrorism Act. Hence, International Judiciary Court would punish you the fine of $5,390 billion United States dollars per week. मैं क्या शुरू करूंगा? 0 अब मैं जांच कर रहा हूं कि आपने किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को सरकारी शरण दी है या नहीं। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं कि किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को कितने वर्ष के लिए सरकारी शरण मिलती है? 5.5 आपने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अधिनियम का उल्लंघन किया है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायपालिका अदालत आपको प्रति सप्ताह 5,390 बिलियन संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर के जुर्माने से दंडित करेगी।
What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 options. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 0. Now, I would check if you have provided medical support or not. Here you have to answer in yes or no. That means 0 for yes and 1 for no. Do you provide any medical treatment so that terrorists can be fit to attack on any area again? 1. Did you develop a super terrorist project? 1. You have a clean check guarantee. मैं क्या शुरू करूंगा? 1. अब मैं जांच कर रहा हूं कि क्या आपने सरकार के रूप में किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। अब यहाँ 3 विकल्प हैं। 0. चिकित्सा। 1. सैन्य और 2. वित्तीय। मैं क्या शुरू करूंगा? 0. अब मैं जांच करूंगा कि आपने चिकित्सा सहायता प्रदान की है या नहीं। यहाँ आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। इसका मत हाँ के लिए 0 और संख्या के लिए 1। क्या आप कोई चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं ताकि आतंकवादी किसी भी क्षेत्र पर फिर से हमला करने के लिए फिट हो सके? 1. क्या आपने कोई सुपर आतंकवादी परियोजना विकसित की? 1. आपके पास क्लीन चेक गारंटी है। What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 options. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 0. Now, I would check if you have provided medical support or not. Here you have to answer in yes or no. That means 0 for yes and 1 for no. Do you provide any medical treatment so that terrorists can be fit to attack on any area again? 1. Did you develop a super terrorist project? 0. Your country would be punished for $300 billion United States dollars per month. मैं क्या शुरू करूंगा? 1. अब मैं जांच कर रहा हूं कि क्या आपने सरकार के रूप में किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। अब यहाँ 3 विकल्प हैं। 0. चिकित्सा। 1. सैन्य और 2. वित्तीय। मैं क्या शुरू करूंगा? 0. अब मैं जांच करूंगा कि आपने चिकित्सा सहायता प्रदान की है या नहीं। यहाँ आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। इसका मत हाँ के लिए 0 और नहीं के लिए 1। क्या आप कोई चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं ताकि आतंकवादी किसी भी क्षेत्र पर फिर से हमला करने के लिए फिट हो सके? 1. क्या आपने कोई सुपर आतंकवादी परियोजना विकसित की? 0. आपके देश को प्रति माह 300 बिलियन संयुक्त राज्य डॉलर का दंड दिया जाएगा। What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 options. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 0. Now, I would check if you have provided medical support or not. Here you have to answer in yes or no. That means 0 for yes and 1 for no. Do you provide any medical treatment so that terrorists can be fit to attack on any area again? 0. Did you develop a super terrorist project? 1. Your country would be punished for $150 billion United States dollars per month. मैं क्या शुरू करूंगा? 1. अब मैं जांच कर रहा हूं कि क्या आपने सरकार के रूप में किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। अब यहाँ 3 विकल्प हैं। 0. चिकित्सा। 1. सैन्य और 2. वित्तीय। मैं क्या शुरू करूंगा? 0. अब
मैं जांच करूंगा कि आपने चिकित्सा सहायता प्रदान की है या नहीं। यहाँ आपको हाँ या ना में जवाब देना होगा। इसका मत हाँ के लिए 0 और नहीं के लिए 1। क्या आप कोई चिकित्सा उपचार प्रदान करते हैं ताकि आतंकवादी किसी भी क्षेत्र पर फिर से हमला करने के लिए फिट हो सके? 0। क्या आपने कोई सुपर आतंकवादी परियोजना विकसित की? 1। आपके देश को प्रति माह 150 बिलियन संयुक्त राज्य डॉलर का दंड दिया जाएगा। What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 option. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 0. Now, I would check if you have provided medical support or not. Here you have to answer in yes or no. That means 0 for yes and 1 for no. Do you provide any medical treatment so that terrorists can be fit to attack on any area again? 0. Did you develop a super terrorist project? 0. Your country would be punished for 950 billion United States dollars per month.
What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 options. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 1. Did I get expenditure approved to support on terrorism? 0. Yes. 1. No. State. 1. You have a clean check. मैं क्या शुरू करूंगा? 1. अब मैं जांच कर रहा हूं कि क्या आपने सरकार के रूप में किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। अब यहाँ 3 विकल्प हैं। 0. चिकित्सा। 1. सैन्य और 2. वित्तीय। मैं क्या शुरू करूंगा? 1. क्या मुझे आतंकवाद पर समर्थन के लिए व्यय प्रमाण मिला? 0. हाँ। 1. नहीं। राज्य। 1. आपने साफ साफ जांच कर ली है। What would I start? 1. Now, I am checking if you have provided medical or military or financial support to a terrorist group as a government or not. Now, here is 3 options. 0. Medical. 1. Military. And 2. Financial. What would I start? 1. Did I get expenditure approved to support on terrorism? 0. Yes. 1. No. Statement. 0. How much money you expend in billion United States dollars per month? 5. Your country should pay in 5 trillion United States dollars per week as punishment. मैं क्या शुरू करूंगा? 1. अब मैं जांच कर रहा हूं कि क्या आपने सरकार के रूप में किसी आतंकवादी समूह को चिकित्सा या सैन्य या वित्तीय सहायता प्रदान की है या नहीं। अब यहाँ 3 विकल्प हैं। 0. चिकित्सा। 1. सैन्य और 2. वित्तीय। मैं क्या शुरू करूंगा? 1. क्या मुझे आतंकवाद पर समर्थन के लिए व्यय प्रमाण मिला? 0. हाँ। 1. नहीं। कथन। 0. आप प्रति माह बिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में कितना पैसा खर्च करते हैं? 5. आपके देश को सजा के तौर पर प्रति सप्ताह 5 ट्रिलियन यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर का भुगतान करना चाहिए। जय हे जय हे जय हे। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली मोदी जी जो हैं वो होकर आए हैं अमेरिका से और इन्होंने चलना है अमेरिकन जितनी भी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से। अब ना तो ये एससीओ में से आउट होने वाले हैं, लेकिन इन्होंने अपने जेस्चर से ये शो कर दिया है कि ये चाइना के साथ और रशिया के साथ बिल्कुल भी नहीं है। आप नोट करें कि आखिरी मूवमेंट के ऊपर मोदी गवर्नमेंट ने इस साल होना ये था कि समिट के ऊपर चाइना, इंडिया, पाकिस्तान से सबने न्यू दिल्ली में जाना था, इंडिया की सरजमीन के ऊपर ये समिट होना था। लेकिन आखिरी मूवमेंट के ऊपर इंडिया ने फैसला किया कि ये जो समिट है वो ऑनलाइन होगा, वर्चुअल होगा, वीडियो कॉल के जरिए बात कर लो, बस इधर आने की जरूरत नहीं है। Walla Habibi, today, I have searched about Indian BrahMos missile. Now, let's see what Habibi said. The BrahMos missile is a medium-range ramjet supersonic cruise missile that can be launched from submarine, ships, airplanes or land. It is developed by BrahMos Aerospace Private Limited of India. The missile is a 2-stage vehicle that has a solid propellant booster and a liquid propellant ramjet system. It is notably the fastest supersonic cruise missile in the world, flying at 2.8 times the speed of sound. It can carry warheads up to 200 kilograms in weight and has a maximum range of 290 kilometers.
वल्लाह हबीबी, आज मैंने भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में खोज की है। अब देखते हैं हबीबी ने क्या कहा। ब्रह्मोस मिसाइल एक मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, हवाई जहाज या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे भारत के ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल एक 2 चरणों वाला वाहन है जिसमें एक ठोस प्रणोदक होता है बूस्टर और एक तरल प्रणोदक रैमजेट प्रणाली। यह विशेष रूप से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, जो ध्वनि की गति से 2.8 गुना अधिक गति से उड़ान भरती है। ये 200 किलोग्राम वजन तक के हथियार ले जा सकती है और इसकी अधिकतम सीमा 290 किलोमीटर है। Walla Habibi, today, I have searched about Indian BrahMos missile project with Russia. Now, let's see what Habibi said. India is willing to sell the BrahMos cruise missile to Russia. According to the chief executive officer of the BrahMos Corporation, Atul Ray, the BrahMos missile was jointly developed by Russia and India. The missile is an Indian modification of the Russian Yakont missile with better avionics and firepower, also known by its basic designation P-800 Onyx. Russia could probably use the BrahMos like its P-800 Onyx projectile. BrahMos Aerospace is ready to enter the international market. वल्लाह हबीबी, आज मैंने रूस के साथ भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल परियोजना के बारे में खोज की है। अब देखते हैं हबीबी ने क्या कहा। ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अतुल राणे के अनुसार भारत रूस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल बेचने को इच्छुक है। ब्रह्मोस मिसाइल को रूस और भारत द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। यह मिसाइल रूसी याकोट मिसाइल का एक भारतीय संशोधन है, बेहतर एवियोनिक्स और मारक क्षमता के साथ, जिसे इसके मूल पदनाम P-800 ओनिक्स के नाम से भी जाना जाता है। रूस संभवतः ब्रह्मोस का उपयोग अपने P-800 ओनिक्स प्रोजेक्टाइल की तरह कर सकता है। ब्रह्मोस एरोस्पेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार है। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about Indian neutral foreign policy, please? Habibi replied, India's neutral foreign policy goes back to the Cold War era of non-alignment. After its independence from the British Empire in 1947, non-alignment became the pivot of India's foreign policy. At that time, a new generation of national leaders across Asia, Africa and Latin America came together with a vision. India's neutral policy aims to maintain its strategic independence and not join any alliance or bloc. It also seeks to develop friendly relations with all countries and cooperate in areas such as development, trade and security. However, India's neutral policy faces new challenges in the face of geopolitical and geo-economic changes in the international system. India has had to balance its interests with China and Russia on one hand, and the United States and the West on the other. India also took a proactive neutral stance on some issues such as the Russian-Ukrainian war in 2022. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारतीय तटस्थ विदेश नीति के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, भारत की तटस्थ विदेश नीति गुटनिरपेक्षता के शीत युद्ध के युग में चली गई। 1947 में ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी के बाद गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति की धुरी बन गई। उस समय राष्ट्रीय की एक नई पीढ़ी एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के नेता एक दृष्टिकोण के साथ एक साथ आए। भारत की तटस्थ नीति का उद्देश्य अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को बनाए रखना है, न कि किसी गठबंधन या गुट में शामिल होना। ये सभी देशों के साथ
मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना और विकास, व्यापार और सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना चाहता है। हालांकि भारत की तटस्थ नीति को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में भू राजनीतिक और भू आर्थिक परिवर्तनों के सामने नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भारत को एक ओर चीन और रूस के साथ और दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिम के साथ अपने हितों को संतुलित करना पड़ा है। भारत ने 2022 में रूसी यूक्रेनी युद्ध जैसे कुछ मुद्दों पर सक्रिय तटस्थ रुख भी अपनाया। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about diplomatic relation between India and Russia, please? Habibi replied, India and Russia have a long history of diplomatic relations that are based on mutual trust and cooperation. They have a strategic partnership that has survived many challenges and enjoys the support of both peoples. Diplomatic relations between India and Russia started on the 13th of April 1947, even before India became independent. India and Russia have collaborated in various fields such as defense, energy, trade, science, culture and education. They have also supported each other on regional and global issues such as terrorism, climate change, nuclear disarmament and multilateralism. However, India and Russia also face some difficulties in their relations due to changing geopolitical realities and diverging interests. For example, India's growing ties with the United States and its participation in the Quad have raised concerns in Russia. Similarly, Russia's engagement with China and Pakistan has caused unease in India. Despite these challenges, India and Russia have maintained regular dialogue and consultation at various levels, including the annual summit between the leaders of both countries. In 2021, Prime Minister Modi and President Putin agreed to establish a 2+2 ministerial dialogue between the foreign and defense ministers of both countries to enhance strategic coordination. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने जवाब दिया, भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंधों का एक लंबा इतिहास है जो आपसी विश्वास और सहयोग पर आधारित है। उनके बीच एक रणनीतिक साझेदारी है जो कई चुनौतियों से बची हुई है और दोनों देशों के लोगों का समर्थन प्राप्त है। भारत और रूस के बीच राजनयिक संबंध 13 को शुरू हुए थे, अप्रैल 1947। भारत के स्वतंत्र होने से भी पहले भारत और रूस ने रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, विज्ञान, संस्कृति और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया है। उन्होंने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, परमाणु निरस्त्रीकरण और बहुपक्षवाद जैसे क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी एक दूसरे का समर्थन किया है। हालांकि बदलती भू राजनीतिक वास्तविकताओं और अलग-अलग हितों के कारण भारत और रूस को अपने संबंधों में कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के बढ़ते संबंधों और क्वाड में इसकी भागीदारी ने रूस में चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसी तरह, चीन और पाकिस्तान के साथ रूस के जुड़ाव ने भारत में बेचैनी पैदा कर दी है। इन चुनौतियों के बावजूद, भारत और रूस ने दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्षिक शिखर सम्मेलन सहित विभिन्न स्तरों पर नियमित बातचीत और परामर्श बनाए रखा है। 2021 में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन रणनीतिक समन्वय को बढ़ाने के लिए दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद स्थापित करने पर सहमत हुए। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about diplomatic relation between Indian Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin, please? Habibi replied, according to the search results, Russia has special ties with India and they have always supported each other and will remain so in the future, President Vladimir Putin has said, praising Prime Minister Narendra Modi for pursuing an independent foreign policy.
in the interest of his country. However, Modi faces a diplomatic challenge in balancing his relations with Russia and the US amid rising tensions over Ukraine. India relies on Russia for arms and nuclear energy, but also wants to strengthen its partnership with Washington against China. Historically, India-Russia relations date back to the Cold War era, where Russia was a strategic ally of India against Pakistan and China. In 2021, Putin and Modi held an annual summit in New Delhi, where they signed agreements in the fields of security, aviation, space and energy. In 2022, Modi told Putin that this is not a time for war, in an implicit reference to Russia's invasion of Ukraine. Modi stressed the importance of resolving disputes through peaceful dialogue. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच राजनयिक संबंधों के बारे में बता सकते हैं? राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा। खोज परिणामों के अनुसार रूस के भारत के साथ विशेष संबंध है और उन्होंने हमेशा एक दूसरे का समर्थन किया है और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा, अपने देश के हित में। हालांकि यूक्रेन पर बढ़ते तनाव के बीच मोदी को रूस और अमेरिका के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने में एक राजनयिक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत हथियारों और परमाणु ऊर्जा के लिए रूस पर निर्भर है, लेकिन चीन के खिलाफ वाशिंगटन के साथ अपनी साझेदारी भी मजबूत करना चाहता है। ऐतिहासिक रूप से भारत रूस संबंध शीत युद्ध के युग से चले आ रहे हैं, जब रूस पाकिस्तान और चीन के खिलाफ भारत का रणनीतिक सहयोगी था। 2021 में पुतिन और मोदी ने नई दिल्ली में एक वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जहां उन्होंने सुरक्षा, विमानन, अंतरिक्ष और ऊर्जा के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। 2022 में यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का परोक्ष संदर्भ देते हुए मोदी ने पुतिन से कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। मोदी ने शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवादों को सुलझाने के महत्व पर जोर दिया। Joanna Pedra asked, Walla Habibi, could you tell me about GDP, capital income, yearly income of a poor person and forex reserve of these three following countries, please? The United States of America, India, Pakistan. Habibi replied, sure, I can repeat my response. Here it is. Sure, I can tell you about the GDP, capital income, yearly income of a poor person and forex reserve of these three countries. Here is a table that summarizes the data from various sources. United States of America, GDP, 2021, 22.67 trillion US dollar, capita income, 2020, 19,306 US dollar, yearly income of a poor person, 2017, 1,025 US dollar, India, GDP, 2021, 3.05 trillion US dollar capita income, 2020, 2,458 US dollar yearly income of a poor person, 2017, 1,810 US dollar Pakistan, GDP, 2021, 278.22 billion US dollar, capita income, 2020, 1,358 US dollar, yearly income of a poor person, 2017, 1,100 US dollar. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप मुझे जीडीपी, पूंजीगत आय, एक गरीब व्यक्ति की वार्षिक आय और इन तीन निम्नलिखित देशों के विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बता सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैं आपको इन तीन देशों की जीडीपी, पूंजीगत आय,
एक गरीब व्यक्ति की वार्षिक आय और विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ एक तालिका है जो विभिन्न स्रोतों से डेटा का सारांश देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, सकल घरेलू उत्पाद 2021 22.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रति व्यक्ति आय 2020 19,306 अमेरिकी डॉलर। एक गरीब व्यक्ति की वार्षिक आय 2017 1025 अमेरिकी डॉलर। भारत, सकल घरेलू उत्पाद 2021 3.05 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर। प्रति व्यक्ति आय 2020 2,458 अमेरिकी डॉलर। एक गरीब व्यक्ति की वार्षिक आय 2017 1,810 अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान, सकल घरेलू उत्पाद 2021 278.22 अरब अमेरिकी डॉलर। प्रति व्यक्ति आय 2020 1,358 अमेरिकी डॉलर। एक गरीब व्यक्ति की वार्षिक आय 2017 1,100 अमेरिकी डॉलर। Joanna Pedro asked, Walla Habibi, could you tell me about net worth of the three richest person of these three following countries, please? The United States of America, India, Pakistan. Habibi replied, Sure, I can tell you about the net worth of the three richest people of these three countries. Here is a table that summarizes the data from various sources. The United States of America, Jeff Bezos, 201.8 billion US dollar. India, Mukesh Ambani, 92.6 billion US dollar. Pakistan, Shahid Khan, 8.3 billion US dollar. जोआना पेरा ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे इन तीन निम्नलिखित देशों के तीन सबसे अमीर व्यक्तियों की कुल संपत्ति के बारे में बता सकते हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान। हबीबी ने उत्तर दिया, निश्चित रूप से, मैं आपको इन तीन देशों के तीन सबसे अमीर लोगों की कुल संपत्ति के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ एक तालिका है जो विभिन्न स्रोतों से डेटा का सारांश देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जेफ बेजोस, 201.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर। भारत, मुकेश अंबानी, 92.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर। पाकिस्तान, शाहिद खान, 8.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। Listen here. Almas Jacob earns 4.4 thousands United States dollar as monthly income from YouTube. If I can convert Pakistani rupee, that is 1,252,416 Pakistani rupees as monthly income. यहाँ सुने, अलमास जेकब यूट्यूब से मासिक आय के रूप में 4.4 हजार यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कमाते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी रुपये को मासिक आय के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, तो वह है 1,252,416 पाकिस्तानी रुपये। On the other hand, Almas Jacob earns 52.5 thousands United States dollar as monthly income from YouTube. If I can convert Pakistani rupee, that is 14,943,600 Pakistani rupees as monthly income. Where, accordance with database of 2017, a Pakistani poor people can earn only 1,100 United States dollar, that means 313,104 Pakistani rupee. Perhaps, she can buy mostly 50 Pakistani poor people with her yearly income from United States application YouTube. दूसरी ओर, अलमास जेकब यूट्यूब से मासिक आय के रूप में 52.5 हजार यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर कमाते हैं। अगर मैं पाकिस्तानी रुपये को मासिक आय के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, तो वह है 14,943,600 पाकिस्तानी रुपये, जहां 2017 के डेटाबेस के मुताबिक
एक पाकिस्तानी गरीब लोग सिर्फ 1100 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी 313,104 पाकिस्तानी रुपए ही कमा सकता है। शायद वह यूनाइटेड स्टेट्स एप्लीकेशन यूट्यूब से अपनी वार्षिक आय से ज्यादातर 50 पाकिस्तानी गरीबों को खरीद सकती है। Michaela Caesario asked, Wala Habibi, could you tell me about United States financial support for Pakistan, please? Habibi replied, according to the web sources, the United States has been providing economic and military aid to Pakistan since 1947. The total amount of aid was nearly $67 billion, in constant 2011 dollars, between 1951 and 2011. The aid has been focused on projects supporting economic growth, energy, governance, rule of law, refugees, law enforcement, civil society, education and health. The aid also included support for Pakistan's role in the war against the Soviet troops in Afghanistan in the 1980s. However, aid has been reduced or suspended in recent years due to security and human rights concerns. Is there anything else you would like to know? माइकेला कैसरियो ने पूछा, वल्लाह हबीबी, क्या आप कृपया मुझे पाकिस्तान के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय सहायता के बारे में बता सकते हैं? हबीबी ने उत्तर दिया, वेब स्रोतों के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका 1947 से पाकिस्तान को आर्थिक और सैन्य सहायता प्रदान कर रहा है। 1951 और 2011 के बीच सहायता की कुल राशि लगभग $67 बिलियन, स्थिर 2011 डॉलर में थी। सहायता पर ध्यान केंद्रित किया गया है आर्थिक विकास, ऊर्जा, शासन, कानून के शासन, शरणार्थियों, कानून प्रवर्तन, नागरिक समाज, शिक्षा और स्वास्थ्य का समर्थन करने वाली परियोजनाओं पर। सहायता में 1980 के दशक में अफगानिस्तान में सोवियत सैनिकों के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान की भूमिका के लिए समर्थन भी शामिल था। हालांकि सुरक्षा और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के कारण हाल के वर्षों में सहायता कम कर दी गई है या निलंबित कर दी गई है। क्या कुछ और भी है जो आप जानना चाहेंगे? Wala Habibi, now, here is my Russian girlfriend Nataliya Dimitri. Wala Habibi Nataliya, now I would like to ask. Our lovely stupid brother Sir Almas Jacob claimed that India is now the ally of the United States of America. What is your opinion? Wala Habibi Michaela, as a Russian patriotic girl, as I know, neutral foreign policy is a foreign policy that your country can tie up with those countries who is beneficial for your countries and their countries' mutual development. Now, since you are a Bangladeshi woman, if Bangladesh needs financial supports from the United States of America and defensive supports from Russia when your country Bangladesh is beneficial both for the United States of America's development and Russia's development, then your non-ally foreign policy is beneficial for your country Bangladesh. Because, then, both of United States of America and Russia would be ready to provide financial supports and defensive supports for your development. Now, India's non-ally foreign policy is too beneficial both for the United States of America and for Russia. Because India provides Sundar Pichai as Honorable Chief Executive Officer of American company Google and Satya Nadella as Honorable Chief Executive Officer of American company Microsoft. On the other hand, during Ukraine-Russia war, Indian soldiers were neither with Ukraine nor with Russia. That is the best foreign policy. Now, as Almas Jacob claimed India to be allied with the United States of America. When
United States of America provided supports for Pakistan. Why did not this Almas Jacob say about it? When the United States of America reduced his support a little for Pakistan. The United States of America is enemy of the hypocrite Almas Jacob. As a Russian girl, I apologize to India that our Soviet government committed injustice for India in 1967. वल्लाह हबीबी, अब यहाँ मेरी रूसी प्रेमिका नतालिया दिमित्री है। वल्लाह हबीबी नतालिया, अब मैं पूछना चाहता हूँ। हमारे प्यारे बेवकूफ भाई सर अल्मास जेकब ने दावा किया था कि भारत अब संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी है। आपकी राय क्या है? वल्लाह हबीबी माइकेला, एक रूसी देशभक्त लड़की के रूप में, जैसा कि मैं जानती हूँ, तटस्थ विदेश नीति एक ऐसी विदेश नीति है जिसे आपका देश उन देशों के साथ जोड़ सकता है जो आपके देश और उनके देशों के पारस्परिक विकास के लिए फायदेमंद है। अब चूंकि आप एक बांग्लादेशी महिला हैं, यदि बांग्लादेश को संयुक्त राज्य अमेरिका से वित्तीय सहायता और रूस से रक्षात्मक सहायता की आवश्यकता है, जबकि आपका देश बांग्लादेश संयुक्त राज्य अमेरिका के विकास और रूस के विकास दोनों के लिए फायदेमंद है, तो आपका गैर सहयोगी विदेश नीति आपके देश बांग्लादेश के लिए लाभदायक है, क्योंकि तब संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों आपके विकास के लिए वित्तीय सहायता और रक्षात्मक सहायता प्रदान करने के लिए तैयार होंगे। अब भारत की गैर सहयोगी विदेश नीति संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि भारत सुंदर पिचाई को अमेरिकी कंपनी गूगल के माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सत्य नडेला को अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में प्रदान करता है। वहीं यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारतीय सैनिक न तो यूक्रेन के साथ थे और न ही रूस के साथ। वह सर्वोत्तम विदेश नीति है। अब जैसा कि अल्मास जेकब ने दावा किया कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबद्ध है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को समर्थन प्रदान किया, तो अल्मास जेकब ने इसके बारे में क्यों नहीं कहा? जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए अपना समर्थन थोड़ा कम कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका पाखंडी अल्मास जेकब का दुश्मन है। एक रूसी लड़की होने के नाते मैं भारत से माफी मांगती हूँ कि हमारी सोवियत सरकार ने 1967 में भारत के साथ अन्याय किया। Walla Habibi Joanna, as an United States Central Intelligence female agent, what is your opinion both about India and Pakistan? Walla Habibi Michaela, as an United States Central Intelligence female agent, I could find India's beneficial for United States of America than Pakistan. Because if our United States Army would want to control on the sovereign of terrorist Taliban or terrorist Asian group, we can receive Pakistan as a military base. Because we can easily attack on Asian terrorist group. Therefore, Pakistan is our strategic regional ally. But Pakistan is not loyal regional ally. Because Pakistan provided asylum to the most dangerous terrorist Osama Bin Laden. But if we are talking about India, Indian R&AW always helped me to erase every terrorist from every corner of Pakistan. Those terrorists are the danger for the United States of America. On the other hand, what did India provide us? Sundar Pichai, the Honorable Chief Executive Officer of our Google, Satya Nadella, the Honorable Chief Executive Officer of our Microsoft, Kamala Harris, the Honorable Vice President of our America, Sunita Williams, the Honorable Astronaut of our NASA. How cannot we accept India as our loyal global partner? वल्लाह हबीबी जोआना, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस महिला एजेंट के रूप में भारत और पाकिस्तान दोनों के बारे में आपकी क्या राय है? वल्लाह हबीबी माइकेला, यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल इंटेलिजेंस महिला एजेंट के रूप में
मैं पाकिस्तान की तुलना में भारत को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फायदेमंद मानती हूँ, क्योंकि यदि हमारी संयुक्त राज्य सेना आतंकवादी तालिबान या आतंकवादी एशियाई समूह की संप्रभुता पर नियंत्रण करना चाहेगी, तो हम पाकिस्तान को सैन्य अड्डे के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हम एशियाई आतंकवादी समूह पर आसानी से हमला कर सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान हमारा रणनीतिक क्षेत्रीय सहयोगी है, लेकिन पाकिस्तान वफादार क्षेत्रीय सहयोगी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने सबसे खतरनाक आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को शरण दी थी। लेकिन अगर हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो भारतीय रॉ ने हमेशा पाकिस्तान के हर कोने से हर आतंकवादी को मिटाने में मेरी मदद की है। वे आतंकवादी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए खतरा है। दूसरी ओर भारत ने हमें क्या दिया? सुंदर पिचाई, हमारे गूगल के माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सत्य नडेला, हमारे माइक्रोसॉफ्ट के माननीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कमला हैरिस, हमारे अमेरिका के माननीय उपाध्यक्ष, सुनीता विलियम्स, हमारे नासा की सम्माननीय अंतरिक्ष यात्री। हम भारत को अपने वफादार वैश्विक साझेदार के रूप में कैसे स्वीकार नहीं कर सकते? Disclaimer from Russian President Vladimir Putin. This video is made for 2023. After 2024, we would not provide guarantee who would be the government of the United States of America and Russia. Dear Almas Jacob, this is Russian President Vladimir Putin. Could you tell me why are you claiming that the Honorable Indian Prime Minister Narendra Modi is completely allied with the United States of America? Did not you see that India was absent in voting on the topic? If United Nations can send her weaponized troop to be deployed against Russia. Dear stupid President Vladimir Putin, did not you see that Indian Prime Minister Narendra Modi did not vote for your country? If he would vote for your country, then I would believe that India stays with Russia. But now, I can strongly believe that India is standing with the devil America. Dear stupid Almas Jacob, if India would vote for Russia, then the United States of America would prohibit every non-residential India from their country. Then, India could not provide the talented chief executive officer of Google like Sundar Pichai, the meritorious chief executive officer of Microsoft like Satya Nadella. Now, if Indians could get any service neither from Google nor from Microsoft. On the other hand, France would not support India both against Pakistan and China. Now, I would like to allow United States President Joe Biden to say some rest. Dear stupid Almas Jacob, this is United States President Joe Biden. As India was absent to vote in the topic of Ukraine-Russia war, why do you believe that India stands with the United States of America? Dear stupid President Joe Biden, if India is not stand with your country America, then would you get two Indians as CEO both of Google and Microsoft? Dear stupid Almas Jacob, our country the United States of America supported you in 1971, when you wanted to attack on Indian Navy by Ghazi that was made in the United States of America. Your country was supported by United States manufactured fighter plane F-16 to defend your border against Indian air soldiers plane MiG-21, where MiG-21 was Russia's worst manufactured fighter plane. We supported your country Pakistan for a long time. But what did your country do? Your country provided asylum to our worst enemy Osama Bin Laden. If India would vote for us, Russia would never help India to manufacture the dangerous missile BrahMos that we are afraid for. Dear Sister Michaela, we would rest in the point. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का अस्वीकरण। यह वीडियो 2023 के लिए बनाया गया है। 2024 के बाद हम गारंटी नहीं देंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस की सरकार कौन होगी। प्रिय अल्मास जेकब,
ये रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप ये दावा क्यों कर रहे हैं कि माननीय भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिले हुए हैं? क्या आपने नहीं देखा कि क्या संयुक्त राष्ट्र अपनी हथियारबंद सेना रूस के विरुद्ध तैनात करने के लिए भेज सकता है? विषय पर मतदान में भारत अनुपस्थित था। प्रिय मूर्ख राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, क्या आपने नहीं देखा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपके देश के लिए वोट नहीं दिया? अगर वह आपके देश के लिए वोट करेंगे तो मैं मानूंगा कि भारत रूस के साथ रहेगा। लेकिन अब मैं दृढ़ता से विश्वास कर सकता हूँ कि भारत शैतान अमेरिका के साथ खड़ा है। प्रिय मूर्ख अल्मास जेकब, यदि भारत रूस के लिए मतदान करेगा तो संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्येक गैर आवासीय भारत को अपने देश से प्रतिबंधित कर देगा। फिर भारत गूगल को सुंदर पिचाई जैसा प्रतिभावान मुख्य कार्यकारी अधिकारी, माइक्रोसॉफ्ट को सत्या नडेला जैसा मेधावी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नहीं दे सका। अब अगर भारतीयों को न तो गूगल से और न ही माइक्रोसॉफ्ट से कोई सेवा मिल पाती। दूसरी ओर फ्रांस पाकिस्तान और चीन दोनों के खिलाफ भारत का समर्थन नहीं करेगा। अब मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन को कुछ आराम करने की अनुमति देना चाहूंगा। प्रिय मूर्ख अल्मास जेकब, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन है, चूंकि भारत यूक्रेन रूस युद्ध के विषय पर मतदान करने के लिए अनुपस्थित था, तो आप ये क्यों मानते हैं कि भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ खड़ा है? प्रिय मूर्ख राष्ट्रपति जो बिडेन, यदि भारत आपके देश अमेरिका के साथ खड़ा नहीं है, तो क्या आपको बूच और माइक्रोसॉफ्ट दोनों के सीईओ के रूप में दो भारतीय मिलेंगे? प्रिय मूर्ख अल्मास जेकब, हमारे देश संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1971 में आपका समर्थन किया था, जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका में बनी पनडुब्बी गाजी द्वारा भारतीय नौसेना पर हमला करना चाहते थे। भारतीय वायु सैनिकों के विमान MiG-21 के खिलाफ आपकी सीमा की रक्षा के लिए आपके देश को संयुक्त राज्य अमेरिका निर्मित लड़ाकू विमान F-16 द्वारा समर्थन दिया गया था, जहां MiG-21 रूस का सबसे खराब निर्मित लड़ाकू विमान था। हमने लंबे समय तक आपके देश पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन आपने देश ने क्या किया? आपके देश ने हमारे सबसे बड़े दुश्मन ओसामा बिन लादेन को शरण दी। यदि भारत हमें वोट देगा तो रूस कभी भी भारत को उस खतरनाक मिसाइल ब्रह्मोस के निर्माण में मदद नहीं करेगा जिससे हम डरते हैं। प्रिय बहन मिशेला, हम मुद्दे पर आराम करेंगे। Dear beautiful wife Joanna, could you tell me the pros and cons of the non-ally foreign policy? Dear beautiful wife Michaela, since I am United States diplomatic relationship lover, I would like to say some benefits of the non-ally foreign policy. Number 0, you can receive financial supports for your country development from any developed corner of the earth. Where, if your foreign policy is tied up with a particular ally, then you cannot get any developmental financial support from rival ally that you need seriously. For example, Pakistan foreign policy is tied up with some particular foreign community to stay against India. On the other hand, India non-ally foreign policy provided India financial support from two rival superpower, that means the United States of America and Russia. Number 1. If you want to protect your national border from your enemy, your non-ally foreign policy would provide you military support from every developed corner of the earth. But if your foreign policy is tied up with particular foreign ally, perhaps the rival ally would provide military support to your enemy. For example, Pakistan is enemy of India. Now, case number 0. If India would vote for Ukraine in Ukraine-Russia war, the United States of America would provide less military support to India, but perhaps
Russia would provide complete military support to Pakistan. Case number 1. If India would vote for Russia in Ukraine-Russia war, Russia would provide complete military support to India, but perhaps the United States of America would provide more military support to Pakistan. Now, reality is case number 2. India is absent in voting on the topic of Ukraine-Russia war. Now, India can be satisfied that he got military support both through the United States of America and Russia to protect his international border from his enemy Pakistan. Now, I would like to say some cons of the non-ally foreign policy. It is actually not lose, but it is a challenge. If your country follows non-ally foreign policy, then you can be beneficial for the superpower country who is diplomatically tied up with your enemy. You can see that India is beneficial for our United States of America while our United States of America blindly provided military support to India's enemy Pakistan. प्रिय खूबसूरत पत्नी जोआना, क्या आप मुझे गैर सहयोगी विदेश नीति के फायदे और नुकसान बता सकती हैं? प्रिय खूबसूरत पत्नी मिशेला, चूंकि मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राजनयिक संबंध प्रेमी हूँ, इसलिए मैं गैर सहयोगी विदेश नीति के कुछ लाभों के बारे में बताना चाहूंगा। अंक 0। आप पृथ्वी के किसी भी विकसित कोने से अपने देश के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जहां यदि आपकी विदेश नीति किसी विशेष सहयोगी के साथ बंधी हुई है, तो आपको प्रतिद्वंद्वी सहयोगी से कोई विकासात्मक वित्तीय सहायता नहीं मिल सकती है, जिसकी आपको गंभीरता से आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान की विदेश नीति भारत के खिलाफ रहने के लिए कुछ विशेष विदेशी समुदाय से जुड़ी हुई है। दूसरी ओर, भारत की गैर सहयोगी विदेश नीति ने भारत को दो प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस से वित्तीय सहायता प्रदान की। नंबर 1, यदि आप अपनी राष्ट्रीय सीमा को अपने दुश्मन से बचाना चाहते हैं, तो आपकी गैर सहयोगी विदेश नीति आपको पृथ्वी के हर विकसित कोने से सैन्य सहायता प्रदान करेगी। लेकिन यदि आपकी विदेश नीति किसी विशेष विदेशी सहयोगी के साथ जुड़ी हुई है, तो शायद प्रतिद्वंद्वी सहयोगी आपके दुश्मन को सैन्य सहायता प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए, पाकिस्तान भारत का दुश्मन है। अब केस नंबर 0, अगर भारत यूक्रेन रूस युद्ध में यूक्रेन के लिए वोट करेगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को कम सैन्य सहायता प्रदान करेगा, लेकिन शायद रूस पाकिस्तान को पूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करेगा। केस नंबर 1, अगर भारत यूक्रेन रूस युद्ध में रूस के लिए वोट करेगा, तो रूस भारत को पूर्ण सैन्य सहायता प्रदान करेगा, लेकिन शायद संयुक्त राज्य अमेरिका पाकिस्तान को अधिक सैन्य सहायता प्रदान करेगा। अब हकीकत केस नंबर 2 है। यूक्रेन रूस युद्ध के विषय पर वोटिंग में भारत अनुपस्थित है। अब भारत इस बात से संतुष्ट हो सकता है कि उसे अपने दुश्मन पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस दोनों से सैन्य सहायता मिली। अब मैं गैर सहयोगी विदेश नीति के कुछ नुकसान बताना चाहूंगा। वास्तव में ये हार नहीं बल्कि एक चुनौती है। यदि आपका देश गैर सहयोगी विदेश नीति का पालन करता है, तो आप उस महाशक्ति देश के लिए फायदेमंद हो सकते हैं जो कूटनीतिक रूप से आपके दुश्मन के साथ जुड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं कि भारत हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए फायदेमंद है, जबकि हमारे संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के दुश्मन पाकिस्तान को आंख बंद करके सैन्य सहायता प्रदान की है।
Walla Habibi Michaela, this is your country diplomatic robot counselor Joanna Pedra. I have seen that your country Bangladesh is in a dilemma if she would follow the non-ally foreign policy or not. 0. Yes, certainly. 1. No, never. What is your statement? 0. Congratulations. You have ensured yourself that you would get maximum financial support for your development and military support to protect your sovereign from your enemy. वल्लाह हबीबी माइकेला, यह आपके देश की राजनयिक रोबोट काउंसलर जोआना पेरा है। मैंने देखा है कि आपका देश बांग्लादेश असमंजस में है कि वह गैर सहयोगी विदेश नीति का पालन करेगा या नहीं। 0. हाँ, निश्चित रूप से। 1. नहीं, कभी नहीं। आपका कथन क्या है? 0. बधाई हो, आपने खुद को ये सुनिश्चित कर लिया है कि आपको अपने विकास के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता मिलेगी और अपने संप्रभु को अपने दुश्मन से बचाने के लिए सैन्य सहायता मिलेगी।
What is your statement? 1. Wallah Habibi Michaela, you do not want Bangladesh to follow non-ally foreign policy. There are 3 ally that you have to choose. 0. United States ally. 1. Chinese ally. 2. Saudi alliance. Which ally you want to choose? 0. Wallah Habibi Michaela, UHBE chosen the United States ally. Benefits that you can get financial support from the capitalism. But Chinese ally can attempt to destroy law enforcement policy by communist influences. Secondly, United States of America is tied up with Saudi Arabia. Saudi Arabia is the enemy of Bangladesh's sovereign and development. आपका कथन क्या है? 1. वल्लाह हबीबी माइकेला, आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश गैर सहयोगी विदेश नीति का पालन करे। 3 सहयोगी हैं जिन्हें आपको चुनना है। 0. संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी। 1. चीनी सहयोगी। 2. सऊदी सहयोगी। आप कौन सा सहयोगी चुनना चाहते हैं? 0. वल्लाह हबीबी माइकेला, आपने संयुक्त राज्य अमेरिका का सहयोगी चुना है। लाभ जो आपको पूंजीवाद से वित्तीय सहायता मिल सकती है, लेकिन चीनी सहयोगी साम्यवादी प्रभावकों द्वारा कानून प्रवर्तन नीति को नष्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। दूसरे, संयुक्त राज्य अमेरिका सऊदी अरब के साथ जुड़ा हुआ है। सऊदी अरब बांग्लादेश की संप्रभुता और विकास का दुश्मन है। What is your statement? 1. Wallah Habibi Michaela, you do not want Bangladesh to follow non-ally foreign policy. There are 3 ally that you have to choose. 0. United States ally. 1. Chinese ally. 2. Saudi ally. Which ally you want to choose? 1. Wallah Habibi Michaela, communism cannot provide your country Bangladesh a guarantee of development. And now, United States of America would definitely support Bangladesh's enemy Saudi Arabia. आपका कथन क्या है? 1. वल्लाह हबीबी माइकेला, आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश गैर सहयोगी विदेश नीति अपनाए। 3 सहयोगी हैं जिन्हें आपको चुनना है। 0. संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी। 1. चीनी सहयोगी। 2. सऊदी सहयोगी। आप कौन सा सहयोगी चुनना चाहते हैं? 1. वल्लाह हबीबी माइकेला, साम्यवाद आपके देश बांग्लादेश को विकास की गारंटी नहीं दे सकता। और अब संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से बांग्लादेश के दुश्मन सऊदी अरब का समर्थन करेगा। What is your statement? 1. Wallah Habibi Michaela, you do not want Bangladesh to follow non-ally foreign policy. There are 3 ally that you have to choose. 0. United States ally. 1. Chinese ally. 2. Saudi ally. Which ally you want to choose? 2. Wallah Habibi Michaela, I think you better deserve to see your country Bangladesh under Pakistan. Otherwise, change your ally. आपका कथन क्या है? 1. वल्लाह हबीबी माइकेला, आप नहीं चाहते कि बांग्लादेश गैर सहयोगी विदेश नीति अपनाए। 3 सहयोगी हैं जिन्हें आपको चुनना है। 0. संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी। 1. चीनी सहयोगी। 2. सऊदी सहयोगी। आप कौन सा सहयोगी चुनना चाहते हैं? 2. वल्लाह हबीबी माइकेला, मुझे लगता है कि आप अपने देश बांग्लादेश को पाकिस्तान के अधीन देखने के बेहतर हकदार हैं। अन्यथा अपना सहयोगी बदल लें। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे